की नमस्कार ऑल माय फ्रेंड्स, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे बीच हमारे MD एंड CEO हमारे बैंक के आए हुए हैं। उनका यहाँ पे उनका उद्देश्य जो है हमारे FCM ऑफिस को इनॉग्रेट करना था, स्टाफ मीटिंग करनी थी, टाउन हॉल मीटिंग। हमारे जो हॉकी के प्लेयर्स हमारे बैंक में हैं, जो अपॉइंटेड हैं या जो वो ऑलरेडी हमारी एकेडमी प्ले करें, उनको ऑनर करना था। तो उसके लिए प्लीज़, और आपसे भी रूबरू होना था, तो उसके लिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे MD साहब से रूबरू हों। और Thank you, Mr. Praveen. Good morning to my friends from the media, both print and electronic. It's a great pleasure for me to be with you in this city of beautiful. You all know that the root of this great institution, Punjab and Sindh Bank, started from this part of the country. The bank was founded in 1908 in Amritsar and then spread its wings across the length and breadth of the country. Today we have more than 1,500 branches. To be more precious, around 1,531 branches across the country we have. And we still maintain the prominence of our birthplace, that is this part of the country. We have more than about 600 branches in the state of Punjab alone. Having such a type of deep root in this pocket, and after I took charge, I was going through the profile of the bank and also interacting with various customers. You may recollect that I was interacting with you about 5 to 6 months back, briefly when I came here on a very short visit, when we were opening some Sedmar here, which I will touch upon. So, keeping that in mind, I found that, in fact, this bank is a household name for the people of Punjab, Chandigarh, Haryana, Uttar Pradesh, like that. So, we decided that we will enlarge our services and make tailored products to suit the requirements of the customers of this part of the country. So, one by one we were doing. Last time when I met, I said that in fact, my first visit started with Amritsar, since the bank was founded there. When I say retail customers, there are large, big corporates which we also serve, but the bank is known for serving the retail customers well. So we decided that our focus will be on enhancing and enlarging the retail segment of the portfolio, be it the liability side or the asset side. And accordingly, we tailor-made. When we looked into the retail advances, for example, the housing loan or the vehicle loan, whatever is required, these are basically, we call it in the banking parlance as a rule-based lending. Not big, this one is required to analyze that. So the bank initially established a centralized processing hub at Delhi. After I took charge, when I reviewed, I felt that Delhi alone will not be sufficient. We need to expand this to the local places, so that the turnaround time can be brought down substantially and the customer's need can be served in time. Accordingly, we expanded the wing of that hub first to Amritsar and Chandigarh. That is how I was here last time when we inaugurated the centralized hub, which we call it as Sedmar. That was inaugurated here. Further step what we did, because I always say that this part of the country, Chandigarh and Punjab, are my heartline. When I say it is heartline, I also need to serve their customers, meet their requirements, and accordingly, we established a general manager's office here, which we call it as a field general manager. The very purpose of establishing a field general manager position is here that the delegation of powers have been given sufficiently to the general manager, who can take the decisions quickly to meet the requirements of the customers. It need not be referred to Delhi. So there are about 9 to 10 zonal offices spread in this part of the country, the state of Punjab, Chandigarh, and a part of Haryana also. All these zonal officers will be reporting to the FGM office. The FGM has been given enough powers to take the decisions
so that the customer's requirement can be met. So this is the another step which we have very recently taken. So I am here with you today because after establishing that, I came here for inaugurating the FGM office, which we did. I also had an interaction with the employees of all my branches and zones in Chandigarh and surrounding the Chandigarh day before yesterday, where I was narrating the performance of the bank and also the strategies of the bank, where we want to take the bank in the near future, mid-term and long-term. These were the discussions which took place. And next was that always we support the sports. Punjab and the bank has a pride to say that the bank is associated with the hockey team. We have on our rolls players who have represented the Olympics, who are the international players, who are the national level players. There are coaches and so on and so forth. As a gesture, I requested all of them to meet them. Accordingly, yesterday I met every one of them. I felicitated them and encouraged them. The bank is always with the sports people to encourage the sports for the country. If you look into today, the country is able to get some of the medals in the Olympics, but there are long way when we compare with other countries like developed countries like States or even our neighbor China. So we need to develop as a responsible corporate citizen. The bank has taken that, yes, we will be supporting, particularly because we have been associated with the hockey team for about 3 decades now. So that is how yesterday I was, and I am glad to tell that as I met the officials of SGPC and the Guru Nanak Dev University during my last visit, this time also I visited top bureaucrats of the government of Punjab, discussed with them for the business opportunities. I see a good opportunity, positive things are there. I hope that the bank will be further expanding. Towards that, we have also tailor-made products to suit the Punjab government employees. We are in the process of similarly making specific products for the citizens of this part of the country, so that whatever be their requirements, we will tailor make it and make available the products to them. If you look into today, the home loan, which normally any citizen of our country is desirous of purchasing a house, which is a life ambition for everyone. The rate of interest what we offer today is the lowest in the country. We charge about 6.65%, starting with 6.65%, and the next best is by State Bank of India, which is 6.8. So if you look into, we are offering the lowest rate of interest. Basically, we feel that it is the wish and desire of every citizen of the country to get a home. Why, as a banker, we should not help the citizen towards that? Accordingly, we have consciously kept the rate of interest starting with 6.65. Similarly, the vehicle. Today, everyone, we are used to have a vehicle. Gone are the days. In fact, I remember I have come to this city of Beautiful about 3 or 3.5 decades back when I was a junior officer in the banking industry. Those days, I used to see a lot of cycles in Chandigarh with full of greeneries, and there was no buses or even the cars were very less. But today I am seeing a different city. The reason is that over a period of time we are used to have such thing, and the comfort has become a necessity. Again, as a responsible bank, we decided that we will play a constructive role in helping the citizen of the country to get their dream come true. Accordingly, for the vehicle loan also, the rate of interest offered by us is the lowest in the country. It starts from 6.8. That is what it is. And the next best is by Bank of Baroda, which is 7%. So these are the two things which normally a general citizen will expect. The Punjab and the bank is with the citizen of the country, more particularly to this part of the country. We have also taken a transformation of the digital banking. Today world, the Z-Gen, the Y-Gen has gone
X has got, Y has got, now it is the Z Gen. The Z Gen, they are very much comfortable with the digital products. So taking cognizance of that, we have taken a digital transformation in the bank. Very shortly, we will be launching an omni-channel, which will be comparable with the best available in the industry. In fact, though I am out of the headquarters, yesterday I had a review of the progress on that project from here for about 3 hours. The project is going well as per the schedule. Hope that by the month end we will be able to launch. And once we do that, next time when I meet you people, I am confident that you will be sharing the pleasant experience of using that app of the Punjab and Sindh Bank and giving your suggestions. That is my request. साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ, मैं अंग्रेजी में बोला था, मैं कोशिश करूँगा थोड़ा हिंदी में भी बात करने का, अगर गलतियाँ होगा तो माफ़ कर लेना। हमारा बैंक का परफॉर्मेंस के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। जो मार्च का क्वार्टर था, तिमाही जनवरी से मार्च, उस क्वार्टर में हमने बैंक को टर्न अराउंड किया था। और क्वार्टर से बैंक का लॉस था, उसको टर्न अराउंड करके मार्च क्वार्टर में हमने नेट प्रॉफिट में लेके आए थे बैंक को 161 करोड़, 161, आई थिंक आई एम राइट, 161 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया। बैंक वॉज टर्न अराउंड। हम वहाँ पे स्टॉप नहीं किया है, इसको सस्टेन करना है, इसको सस्टेन करना है। और जून क्वार्टर में हमने इसको सिर्फ सस्टेन नहीं किया, बढ़ा भी था। हमारा प्रॉफिट बढ़ाया 174 करोड़ को 3 मंथ्स में। ये 3 महीने हैं जो अप्रैल से जून है। इस देश में बहुत चैलेंजिंग टाइम था। ये कोरोना महामारी का सेकेंड वेव बहुत तेज था। पूरे देश में, शहर हो, गांव हो, सब लोग को अफेक्ट हुआ। मेरा बैंक ने बहुत कर्मचारी का जो वैल्यूबल लाइफ है वो भी चला गया। एक समय था जिसमें मेरे को बैंक चलाना ही चैलेंज हुआ कि मेरा तकरीबन 28% का एम्प्लॉइज दे वर अफेक्टेड। उनके अलावा कुछ एम्प्लॉइज थे वो अफेक्ट नहीं हुए, लेकिन उनके फैमिली में उनके वाइफ हो या हस्बैंड हो या बच्चे हो वो अफेक्टेड है, जिसके कारण वो ऑफिस नहीं आ सकती थी। उसके बावजूद भी ये पंजाब एंड सिंध बैंक का कर्मचारी है, सब लोगों ने फ्रंट ऑफिस में बैठकर सारे ग्राहकों को सेवा दिए हैं और ये परफॉर्मेंस भी दिए हैं कि प्रॉफिट को हमने सिर्फ सस्टेन नहीं किया, बढ़ा कर भी दिखाया। आने वाला दिन में भी हमारा उम्मीद है कि हम इससे ज़्यादा परफॉर्म करेंगे और पंजाब एंड सिंध बैंक का नेम फ्लैग विल बी फ्लाइंग हाई। बैंक का और एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जो एनपीए का ऊपर है, वो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए कहते हैं। ग्रॉस एनपीए को भी हमने नीचे लेके आया था, जो जून 20 में 14.34% था, जून 21 में उसको 13.33%, दैट इज 101 बिप्स नीचे लेके आया। नेट एनपीए था जो 7.57 था जून 20 में, उसको 3.61 में लेके आया, नियरली 400 बिप्स उसको नीचे लेके आया। मैं हमेशा कहूँगा हर पोडियम में कि नेट एनपीए है दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो दिखता है कि बैंक का कंफर्ट क्या है, कुशन क्या रखा है। अगर कुछ हो जाता है, वो लोन नहीं वापस आ जाता है, बैंक का शॉक अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी क्या है, वो नेट एनपीए दिखाता है। वो नेट एनपीए हमने 7.57 से लेकर 3.61 तक नीचे लेके आया। इसका मतलब है मेरा बैलेंस शीट बहुत स्ट्रेंथ हो गया। ये दूसरा पैरामीटर से भी दिखाएगा कि प्रोविजन कवरेज रेशियो कहते हैं, ये दिखाता है आपका बैड लोन को जो एनपीए कहते हैं उसमें कितना % आपने आपका प्रॉफिट से प्रोवाइड करके रखे हुए हैं। वो है अभी मेरा 84% है।
अगर 100 रुपया का NPA हो, 84 रुपया मैं मेरा प्रॉफिट से अलग से उसको रखा है, सो जो भी आएगा मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा. So provision coverage ratio has gone up, which is again a very, very important parameter for your bank, and the bank is on a very sound foot. तीसरा पैरामीटर इंपॉर्टेंट होता है कैपिटल एडिक्वेसी. कैपिटल एडिक्वेसी देखेंगे, मेरा कैपिटल एडिक्वेसी था 12.81% एक साल पहले, जो जून 2020 में. अभी मेरा कैपिटल एडिक्वेसी है 17.62. I am comfortably capitalized. I have enough headroom for expansion of the business. So इसलिए हम अच्छा बिजनेस को लेते हैं और चाहता हूँ कि पंजाब में, चंडीगढ़ में मेरा बिजनेस और बढ़ाएंगे देश से. आप सबका सपोर्ट चाहिए, ठीक है. मैं आपसे निवेदन करूँगा कि आप हमारा बैंक में आपका खाता रखिए और आपका फ्रेंड्स को बताइए कि पंजाब एंड सिंध बैंक है, जो अभी डिजिटल ट्रांसफॉर्म भी कर रहे हैं, जिसमें इस महीने के अंदर आपको नया ऐप भी आ जाएगा, ओमनी चैनल है, उसका सुविधा उठाइए और बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा यू प्लीज़ ब्रिंग द कस्टमर्स टू द बैंक. आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू बी द एम्बेसडर्स फॉर द पंजाब एंड सिंध बैंक. थैंक यू वेरी मच. आई विल बी टू ग्लैड टू टेक एनी क्वेश्चन एंड आंसर्स फ्रॉम यू. मेरा एक क्वेश्चन है. आपने मुझे कहा कि हम सबसे कम इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, हाउसिंग में भी सबसे कम ले रहे हैं और व्हीकल्स में भी हम सबसे कम में, लेकिन हिडन चार्जेस आपके काफ़ी हैं. मतलब कि इंटरेस्ट रेट तो सामने नज़र आता है जो आप पब्लिकली दिखाते हैं. हिडन चार्जेस जो सामने नज़र नहीं आते या कहीं बताए नहीं जाते, जब कस्टमर आपके यहाँ फंस जाता है तो वो चार्जेस शुरू हो जाते हैं ईयरली, क्वार्टरली. मैं बताता हूँ आपको आंसर कर लेता हूँ. ऐसा हमारा कोई हिडन चार्ज नहीं होता है. पर्टिकुलरली पब्लिक सेक्टर बैंक में, सिर्फ मेरा बैंक नहीं है, ये तो मेरा चौथा बैंक है, ठीक है. वो पब्लिक सेक्टर बैंक में जनरली हिडन चार्जेस नहीं होता है. हमारा बैंक में तो बिल्कुल नहीं है. जो आप कहते हैं ईयरली है, वो चार्जेस भी बहुत ही कम है. अगर आप कंपेयर करेंगे, ये चार्जेस सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी लोग भी कर रहे हैं और उसमें ज़्यादा नहीं करते हैं. आप उसको कैलकुलेट करिए क्या चार्ज करते हैं और बाकी बैंक क्या करते हैं. ये तो पहले मैं ये करना चाहता हूँ, कोई हिडन चार्ज नहीं है. हम पहले बताते हैं क्योंकि हाइड करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है. इधर फंसने के बाद हम नहीं कर रहे हैं, पहले ही बताते हैं कि ये हमारा चार्जेस है, ये हमारा टर्म्स है. उसको आप किसी बैंक से भी कंपेयर करिए. अगर मेरा ज़्यादा हो, मैं उसको रिव्यू करने का तैयार हूँ. मेरा कहने का मतलब है, आप यदि हिडन चार्जेस कुछ भी ले रहे हैं, जो भी आप ले रहे हैं हिडन चार्जेस, अगर उसको आप ट्रांसपेरेंटली पहले बता रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ. नहीं, वो आते नहीं है हिडन चार्जेस. अगर मेरा मानना है, मैं अभी इंस्ट्रक्शन दे दूंगा आपके सामने मेरा GM साहब को कि वो सर्कुलर निकालें, क्योंकि वो उसमें ज़्यादा नहीं है. मेरा वेबसाइट में भी है प्रोसेसिंग चार्जेस क्या है. प्रोसेसिंग चार्जेस अभी भी हम उसको मुफ्त किया है कि कहीं पे 50% का कंसेशन दिया हुआ है, पीरियड दिया है, फेस्टिवल सीजन मना रहे हैं, उसका समय पर हम पूरे वेव करते हैं. और ये होम लोन फाइल इंस्पेक्शन होगी, साइट इंस्पेक्शन होगी, आपका कहते हैं इंश्योरेंस होगी, आपके इतने हिडन चार्जेस काफ़ी हैं. वो हिडन नहीं है. सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, हिडन नहीं है. उसको आप, मैं बोलूँगा कि प्रोमिनेंटली भी sanction में मेंशन करें. Sir, I have a question. During Corona times, every financial crisis has been there in India. But you're saying that you've gone up. Your balance sheet has gone up. This is what you've said in your announcement. Yes. You've announced right now. Yes. So how does it happen to be? Because of the reason that people have not submitted any money, they've not credited it. Might be they debited it. So how come, like your bank has gone up in the last 3 months? Yeah, I will tell you. In fact, the citizen of this country, we should salute them. By and large, the citizen of the country has got a commitment to honor their words. Even in the tough times, most of the people. Some of the people may be there that they may not honor the commitment. But everyone, by and large, takes the earnest effort to honor the commitment. Now, I will tell you, during this challenging time, हमारा रेगुलेटर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और भारत सरकार
दोनों ने बहुत सॉफ्ट्स ले आए हैं इसको एड्रेस करने के लिए। रेगुलेटर ने बोला कि आप इसको रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क जिनको रीशेड्यूल करना है लोन को वो रीस्ट्रक्चर करो। जो फर्स्ट वेव में आया उस समय में भी उन्होंने बोला, अभी सेकेंड वेव में भी बोला है रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2। बट लेट मी शेयर द एक्सपीरियंस ऑफ मी व्हेन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गेव द गाइडलाइंस दैट ये एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, इसके हिसाब से जो कंप्लाई कर रहे हैं उनका अकाउंट को आप रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। नॉर्मल टाइम पे रिस्ट्रक्चर करेंगे तो स्टैंडर्ड अकाउंट है एनपीए हो जाता है। लेकिन आरबीआई ने बोला इस समय पर ये कंडीशंस जो बोरोयर्स कंप्लाई करते हैं उनको आप रिस्ट्रक्चर करोगे तो वो एनपीए नहीं होगा, स्टैंडर्ड में ही रहेगा। ठीक है, उसके हिसाब से हमने सारे अकाउंट को चेक किया है क्या कौन सा अकाउंट उसको एलिजिबिलिटी में आता है। Your shares went up. हाँ जी, Your shares went up. Your asset shares. yes, it went up. How much? I will tell you. I will touch upon all your questions. So then what happened? We found which are all the customers who are eligible and we contacted them. I am talking of the framework 1, that is wave 1. There were large number of borrowers who were eligible and initially they said that, sir, हमारा अकाउंट को रिस्ट्रक्चर करिए, रिक्वेस्ट दिए थे उन्होंने। सो हमने उनसे एप्लीकेशन लिया और उनका रिस्ट्रक्चर भी करना शुरू किया है। तब तक ये वेव कम हुआ है, सबसाइड हुआ है। एंड यू मे रिमेंबर दैट लास्ट क्वार्टर में थोड़ा एक्टिविटी स्टार्टेड पिकिंग अप, द इकोनॉमी वाज पिकिंग अप स्लाइटली। देन द पीपल केम फॉरवर्ड एंड सेड, सर हमने आपको रिक्वेस्ट दिए थे रिस्ट्रक्चर करने के लिए, लेकिन हम जो ओरिजिनल सैंक्शन है उसके हिसाब से पे करेंगे, रिस्ट्रक्चर मत करिए। दैट शोज द कमिटमेंट। दैट इज व्हाई आई सेड दिस इज द कंट्री वेयर स्टिल people are loyal. They said. Now the resolution framework 2 has come. When the resolution framework 2 came, similarly the RBI gave different eligibility criteria. उसके हिसाब से हम हर कस्टमर को अप्रोच किए थे, उनको इन्फॉर्म किए SMS के थ्रू, मेल के थ्रू। मेरा कर्मचारी उनका घर गए हैं, बोला था कि आपका एलिजिबिलिटी है। ठीक है, अभी भी मैं देख रहा हूँ उसका टाइम है और भी अभी भी देख रहा हूँ लोग कहते हैं सर हम थोड़ा देखेंगे, अगर हमारा एक्टिविटी बढ़ जाता है तो रिस्ट्रक्चर नहीं करिए, अगर नहीं है तो रिस्ट्रक्चर करिए। दिस इज द सिटीजन्स एटीट्यूड। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन ऑफ शेयर प्राइस, माई शेयर प्राइस वॉज अराउंड 10 rupees when I took charge. That was less than a year now, and after the June result it went up to about 22-23 rupees. Today it has come down again because the market itself is doing bad. So if you look into it is like that. But there are various parameters for the market. One is the market capitalization. My bank shares are majority held by the government of India. So the float is less. But if you look into the important ratio which is called the price to book value, PB ratio, our bank is one of the best amongst the public sector bank, which is more than 1, which normally happens in case of private sector bank. So I feel that the investors look the value in the stock of the bank. I hope I have answered your question. कृष्ण सर, मेरा एक क्वेश्चन है, थर्ड वेव की बात चल रही है, अभी कोविड थर्ड वेव भी आने वाली है। आपको क्या लगता है, आपका क्योंकि सारी उम्र आपकी बैंकिंग सेक्टर में रही है, आपको क्या लगता है जो थर्ड वेव आएगी तो बैंकिंग पे कितना असर पड़ेगा? सर ऐसा है, मैं तो रोज भगवान से, गुरु से प्रे करता हूँ कि थर्ड वेव ना आए। बैंक को भूल जाइए, कितना लोग को अफेक्ट किया, हाउ मेनी पीपल लॉस्ट देयर वैल्यूएबल लाइफ, इज इट नॉट? So from that point of view, every day I pray that the third wave should not come. Sir, games. What are the preparations for that? Haji? What are the preparations for that? See, preparation, the government is also making a lot of preparations. I say that it is in our hand. If you ask me, now I have just removed the mask, that itself is wrong. Sir, I removed because little distance is there and you people are wearing the mask.
Sir, games, you've been associated with hockey for past 3 decades, as you said. Yes. So why not hockey as shining as cricket is or any other game is number one? Number two, sir, if you're supporting that much to the games, then why they are not doing so perfectly well in their games? Because like smaller countries have won 50-50 golds, and we have to satisfy with the bronze and silvers only. See, Why don't you provide them so much, a practicality, it's not practical enough to give if statement you- that 30 years no, we've been if you look supporting hockey. into if you look into any developing country will have these issues. Any developing country will have these issues. India is a developing country. If we look into the history and now where we are, we have come a long way. We have come a long way. Now supporting is not by one person. It is the involvement of all the citizens of the country. All the citizens of the country who have to support these sports, the development of the sports. The awareness amongst the citizens are coming. I hope that in the days to come it will be further growing up. More particularly, it is a pride for me sitting in this part of the country. It is Haryana which has taken a lot of medals. We wanted, If I'm right. we wanted gold from hockey as well I hope that we will be getting. in next 3 years. I So, hope sir, that will we will you be getting. felicitate the hockey team? Are you planning to facilitate hockey team in coming days? It was that the bank has been associated with the hockey team for more than 3 decades. The bank has a good hockey team, bank itself. The bank has on its roll large number of hockey players who have represented the Olympics, who are international players, who are national players, who are also the coaches. This Olympic? This Olympic, no one has represented. But otherwise, there are 2 or 3 Olympians in my bank role. So I thought that having come at this time here, I felt that I should meet my fellow colleagues who are the good players, who have played for the country, and which will go a long way in encouraging their morale. So, in spite of the busy this one, I said I would like to meet them. That will be one of my schedule. So, accordingly, I met them yesterday. As the root of your bank is in Punjab, Chandigarh, so do you have any future plan for them? Special future plan in coming days or? That is what I Next 5 said. years. Now, whatever I am doing by and large to Punjab and Chandigarh. Be it a retail processing hub, I have opened 2 hubs, one in Amritsar and one in Chandigarh. I consider Chandigarh and Punjab as one and the same for all practical purposes. Even the Secretariat of Punjab is functioning here only. So I consider it as one and the same. Second, I have established a general manager position, a unique, the only GM office in the country for Punjab and the bank is here. Nowhere else is there. Other places there are only zonal managers who are which is headed by a AGM or a DGM and who report to the GMs at the head office. But this is the only place where I have stationed a general manager so that the citizens of this part of the country can be served, their requirements can be understood better, and then we can give a better service. So